ની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને હવે ગણતરીના જ કલાકો છે બાકી, ત્યારે સમગ્ર દેશમાં રામમય માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને એમાં પણ રંગીલા સુરતના રંગ કંઈક ઓર જ નિખરી રહ્યા છે। तो सूरत शहर में अद्भुत मनोहारी रंगोळीना दृश्यों सामे आवी रह्या छे। सूरत शहरना कतारगाम विस्तार में पूरा 11,111 स्क्वेर फूट विस्तार में मनमोहक रंगोळीनी रचना करवामां आवी। लगभग 40 जेटली कलाकार महिलाओं सतत 16 कलाकनी मेहनत बाद अद्भुत रंगोळीनी रचना करी छे। रंगोળી એટલી સુંદર છે કે તેને જોઈને કોઈ પેઇન્ટિંગ નિહાળી રહ્યા હોય તેવો ભાવ જાગે છે। રામ મંદિર, श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और साथ ज वानर सेना पण रंगोળી में दृश्यमान थई रही है। आ रंगोળી माटे रेकॉर्डनो पण दावो करवामां आव्यो छे। मारी कलार्पण आर्ट क्लासनी मारी संस्था है और मारी जे टीम है जे वानर सेना समान है ने बहुत मेहनत करी और आ रंगोળી बनावी है। कंटीन्यू ब्रेक लीधा विना 15 થી 16 कलाक में आबेहूब चित्र तैयार करवामां आव्युं छे। आ चित्रनी विशेषता ए है कि हाइपर रियलिस्टिक आबेहूब पेंटिंग लगे एटली मेहनत थी फ्री हेन्ड थी दोरीना रंगोળી तैयार करवामां आवी छे। आमां विविध प्रकारना अलग अलग जे आपणे चिरोड़ी थी ओळखीए छीए ए कलर आमां उपयोग करवामां आव्या छे। आ रंगोળી पूर्ण करता लगभग अमने 15 कलाक जेटलो समय लाग्यो छे अने 40 जेटली बहनोए आ रंगोળી तैयार करी छे। पण रंगोળી तैयार करती वखते अमने बिल्कुल थाक नहीं लाग्यो अने श्री राम भगवान सतत अमारी साथे हता एवो अमने अनुभव थयो छे। राम मंदिर ने लईने लोकोमां अनेरो उत्साह छे, त्यारे सूरतना वेडरोड गुरुकुळमां मानव सांकळथी धनुष बाणनी रचना करवामां आवी। एटલું જ नहीं, बाळकोए मानव सांकळथी ज श्री राम नामनी पण रचना करी। आ नजारो पण एटलो अद्भुत हतो के निहाळ्या ज करीए। बे तरफ मूर्ति प्रतिष्ठा की घड़ी ने यादगार बनावा सूरतना ग्रीनमेन तरीके ओळखाता विरल देसाए 21,000 सीता अशोक वृक्षना छोड़ने लोको में निःशुल्क वहेंचवानो एक लक्ष्य हाथ धर्यो छे। माता सीता ज्यारे लंकानी अशोक वाटिका में हता त्यारे त्यां आ वृक्ष होवानुं मनाय छे। पर्यावरण माटे खूब ज लाभदायक मनाता आ वृक्षना छोड़ने खास कर्णाटकथी मंगाववामां आव्या छे। सीता जो अशोका वाटिका में बैठा था अने आ सीता अशोकનું વૃક્ષ એવું છે કે એમ કહી શકાય કે એનાથી સમૃદ્ધિ આવે, જે આંગણામાં એને રોપ્યું હોય ત્યાં સમૃદ્ધિ આવે અને શોક નહીં થાય એવું વૃક્ષ છે। એટલે ખાસ કરીને આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા યંગસ્ટર્સમાં કે સિનિયર સિટીઝન્સમાં હમણાં એક ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી એનો એક ભાવ રહે છે। તો અગર એવું વૃક્ષ આપણી આજુબાજુ હોય ને નેચર, પર્યાવરણ આપણી સાથે એવું હોય કે જેમાં રામલલ્લાને આપણે યાદ કરી શકીએ ને પરમનન્ટ, એટલે 2-3 વર્ષ એના પછી પણ વર્ષો વર્ષ આવનારી પેઢીઓને ઓક્સિજન સારું પ્રોવાઈડ કરી શકે, શોક નહીં થાય એવું ઝાડ જ્યારે આપણી સાથે રહી શકે। તો આ એક પ્રયાસ છે